Friends, to another episode of the Money Mindset Master with Vikas Uji. Friends, this is a series whereby we are moving from the restricted mindset to the growth mindset. We are moving from financial accumulation to financial stability. And in the process, we are learning first the topics that are necessary to understand, or we should have the clear understanding about those terms which would be helpful in generating the wealth. And then go into the deep meaning of each of those terms. Hence, these two series, the Money Mindset Mastery and the Midas Touch, they go hand in hand so as to secure your future financially. That is our main goal. So, don't mix up the financial accumulation to financial stability. We will be learning those financial terms in details towards the mastery of the finance. And in this process, as we continue to explore different types of investment and strategies for building wealth, there is one critical aspect of financial planning that we often overlook: securing our future with proper documentation. That is what we have been overlooking. Overlooking माने हम भूल जाते हैं. एक बार वेल्थ जनरेशन में लग गए, बस अब वेल्थ जनरेट करते जा रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर ही नहीं रहे हो. बाद में करेंगे, ये बाद में कभी आता नहीं है. Hence, I thought it proper that I should introduce this term as we are proceeding further towards our wealth accumulation. So whether you are just starting or to invest or you are nearing retirement, no matter about it. अभी जस्ट शुरू किया, अरे नहीं वो तो अभी रिटायरमेंट तक तो टाइम है, नहीं, उसका सवाल ही नहीं है. Having a solid plan in place for protection and transfer of your assets is essential. That is what is important. सिंपल बात है. पैसा किसका? आपका. डिसाइड किसने करना है? आपने. बस ये ध्यान में रखिए. If you have to decide, then you have to be prepared also. So this is where the importance of will and trust comes in. So you might think that creating a will or trust is something that only retirees need to worry about. अरे अभी क्या है, जिंदगी पड़ी है, बाद में देखेंगे. ये सोच बराबर नहीं है, because life is posing challenges every now and then. पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है और कब क्या होने वाला है. So आपको prepared रहना पड़ेगा so that you can successfully navigate your life through the challenges. So, but that is what the truth is. No matter your age and stage of life, preparing these legal documents can help ensure that your assets are managed and distributed according to your wishes. है ना? पैसा किसका? आपका. डिसाइड किसने करना है? आपने. अगर आप चाहते हो आपके विशेष के अनुसार आपके जो जनरेटेड वेल्थ है, जो आपके पास स्टेट है, जो आपके पास प्रॉपर्टी, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपके विशेष से होना है, क्योंकि ये आपने जनरेट किया हुआ है. अगर आप ये चाहते हो, then you should have wills and trust in place. These are the legal documents that will help you and helps your loved and dear and loved ones to be financially secured as per your wishes. So it's about securing your financial legacy and providing peace of mind for you and your loved ones also. आप भी शांति से जियोगे, अपने बच्चों को भी शांति से जीना सिखा दोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. जब उनका भी आपके ऊपर पे भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, if you take such steps. So in today's video, we'll discuss how integrating these elements into your financial strategy not only helps you to protect your wealth, but also consolidates your financial plan in a way that aligns with your investment goals, regardless of whether you are just starting or planning for retirement. जो भी हो. If you are following these steps in parallel with the wealth generation process, you are on the right track and very consolidated position.
So let's dive into why these legal structures are so important and how they can be vital part of your investment processes. So wills and trusts are the foundational tools for assets distribution and protection. While younger people may not see this as an immediate need, understanding the basics early can help them structure their investments wisely as their wealth grows. This is the important step. इसीलिए मैंने अभी तो शुरुआत की है यार, ये अभी थोड़ी बनता है, ये तो मेरा मेरा वेल्थ जब कुछ बना होगा, अरे जो भी है वो आपका ही है, वो 1 रुपया हो या 10 रुपए हो या 10 करोड़ हो, पैसा आपका ही है. Now if you value your rupee, how you look at that is the question. ये तो क्या इतना सही अमाउंट है, तो फिर वो उतना सही रहे, अरे कितना जनरेट किया है मैंने, तो वो बहुत बड़ा बन गया. You see, every rupee that you have earned is your property, correct? Now, how to distribute it is again then your will. जो भी है आपका, जितना भी है, उसे आप अगर विल में लिखोगे तो दैट वुड बी मोर प्रॉपर, दैट इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर योर विशेस. रिटायरीज के लिए तो विल्स एंड ट्रस्ट एस्टेट प्लानिंग टू सिक्योर फैमिली लेगेसीज के लिए होता है, वो प्रोवाइडेड टू द लव्ड वंस एंड पोटेंशियल रिड्यूस एस्टेट टैक्सेस बचाने के लिए. व्हाई यू नीड विल एंड ट्रस्ट? इट एंश्योर्स that the bank accounts, property, stock are distributed as intended. जो भी मैंने पैसा किसका, मेरा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को ये, वाइफ को ये, पिताजी को ये, फला फला, ये जो भी आपके नियर एंड डियर वंस होंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट डाउन. अब कौन सा बड़ा काम है? नहीं, ये बड़ा काम नहीं है, लेकिन बड़ा काम है, बिकॉज ये पैरेलल करोगे तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से निकल आती है. एक तो आप पता होता है आपको आपकी टोटल एसेट्स कितना बन रहा है और आपके नेटवर्थ क्या हो रही है. सो यू हैव टू रिव्यू आफ्टर एवरी सर्टेन डेज. जब शुरुआत करोगे तो ये करना पड़ेगा. जब बड़े बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप करते जाओगे, बिकॉज नाउ यू आर यूज्ड टू रिव्यूइंग द थिंग्स एंड अगेन प्लानिंग फॉर फ्यूचर. सो इट्स प्रोएक्टिव स्टेप फॉर फ्यूचर फैमिली एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर यंगस्टर्स, है ना. जिसने अभी शुरुआत, मैंने कहा ना अभी मैंने शुरुआत की, ठीक है ना, अभी शुरुआत की तो पैरेलल ये आदत डाल दो. जैसे आप बड़े होते जाओगे, नाउ यू हैव गॉट द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट. वी आर टेकिंग अ प्रोएक्टिव स्टेप फॉर फ्यूचर अनप्रेसिडेंटेड हैपनिंग्स दैट द लाइफ इज पोजिंग चैलेंजेस एवरी नाउ एंड देन, करेक्ट. वी हैव टू नेविगेट द लाइफ सक्सेसफुली, ओवरकमिंग दोस चैलेंजेस, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोएक्टिव स्टेप्स. So for retirees, it becomes a critical for ensuring that the wealth is passed on according to their wishes. ये तो बहुत necessity हो जाती है for the people who are retired, aged people, golden years people. This will help them to avoid probate and offer privacy in asset distribution, while supporting their heirs and charitable causes also. जो भी उनके मन में इच्छा होगी, they can always do these things and should do. So type of trust and their benefits for the young investors, different type of trusts, जैसे revocable, irrevocable, family trust, and how they can protect the assets from creditors, taxes or disputes. ये सारी चीजें आती है. We'll be discussing these things in the next other videos, when I will be talking more on wills, trust and other documents which are helpful for us to distribute the wealth that we have generated. It is crucial that they have that the property is distributed among their dependents. It is a proactive step जो है, जो हमने family members के लिए ली गई है. So it is a setting up of your trust part. Now the retirees के लिए the detailed exploration of trust suited to estate planning जो रहेगा, उस तरह से आपको करना पड़ेगा. We will be talking, I'm repeating that, on these type of trust and wills
in detail in the videos to come, because I wish that we all understand this as an avenue to take a decision on passing on the legacy to our dependents. है ना? So who want to secure and care for the provisions for an adult child अगर रहेगा तो they have got this option. अगर minor child रहेगा तो they can appoint a guardian, and then it will be passed down to that child. Whatever grandchildren को अगर देना है तो गार्डियन अपॉइंट करके आप वो दे सकते हो, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को ही मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट आप चाहते हो. दैट इज हाउ इट इज टू बी डन. सो द पावर ऑफ अटॉर्नी इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोविजंस डायरेक्टिव्स. ये भी होता है. सो allow someone to make financial and medical decisions if one becomes incapacitated. That is how the power of attorney plays the role for. किसी को अपॉइंट करोगे and then you ask him to execute what you wish to do. Now this will help you and your and near and dear ones to not to evade taxes but to save taxes. In a way you are saving wealth, in a way you are giving him the wealth. Also the double benefit that you are protecting him from the taxes. So that is how we have to proceed further. Now once you have decided, तो मन में क्यों रखना है? डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कर देते? कर देना चाहिए. अब जिंदगी की शुरुआत में ही मैंने अगर कर दिया है, कोई बात नहीं है. Why not prepare it or write it down in your personal journal that this will be my will? How and what is the legalities? I will be discussing in detail when we talk of the will and trust in detail in our next videos. But understand today that this is one of the parallel and important part that you should start once you start generating income. जैसे मैंने कहा कि आपने जैसे पहला इनकम जनरेशन किया, आपने आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए. एक फंड रिटायरमेंट के लिए रख देना चाहिए. सिमिलरली जैसे आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, प्रिपेयर द विल इमीडिएटली. क्या चाहते हो कि आपके साथ कोई दुर्घटना अगर घट जाती है तो किस किस को कहां कहां पे क्या क्या पैसा मिलना है, कैसे को आपके लीगेसी पास ऑन करनी है, एसेट्स आपके कितने हैं, सब लिखा हुआ. यू आर वेरी वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसाइसिव ऑल्सो. क्यों? पैसा आपका है, डिसीजन आप ही नहीं लेना है. Why ask someone else to take the decision for your money that you have taken so much of efforts to generate for? है ना? इतने कष्ट करके अगर पैसा कमाया है, किसके लिए कमाया? खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस, उनके लिए किया है ना. तो क्यों ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, विनियोग भी आप तैयार करके रखें. देना नहीं है जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाता है तो भाई अब मैंने तो प्रिपरेशन कर रखी है. दिस इज हाउ माय अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. माय अमाउंट, पैसा आपका, डिसीजन आपका. सो यू हैव टू प्लान योर एक्टिविटी फ्रेंड्स, बिकॉज इन फाइनेंस विदाउट प्लानिंग इट नेवर गिव्स यू गुड रिजल्ट्स. अब ये शुरू से करना है या रिटायरमेंट में, मैंने कहा कि एज का कोई इससे मतलब नहीं है. मैंने कहा था कि वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग द इनकम यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग आल्सो. वैसे ही वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर नेम, यू स्टार्ट योर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आल्सो. वो डिसीजन आपने एक विल के हिसाब, ये डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर योर विशेस. क्यों? क्योंकि पैसा आपका है. You have to decide. Nobody else can take a call on that and should not. So friends, I have just given the broad outline, and we will be discussing in detail these instruments
because these are the steps towards legalities, the legal documentation part of your assets, of your created wealth, and a precautionary measure also, so as to distribute the wealth in case of any mishap happens with anyone amongst us. सिंपल लाइन ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, पैसा किसका? आपका। डिसीजन किसने लेना चाहिए? आपने। तो डॉक्यूमेंटेशन करके रखिए, पर्सनल जर्नल रखिए, उसमें लिखिए, उसका रिव्यू कीजिए, उसे रिफ्लेक्ट कीजिए। शुरुआत में रिफ्लेक्शन पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वेल्थ जनरेशन जब बहुत हो जाएगी तो आपको उसका रिव्यू हर महीने, हर 15 दिन बाद एक बार देखना पड़ेगा। बिकॉज as the wealth is growing, so also the age is increasing. And that cannot be the hindrance, or that cannot be the deciding factor of how your wealth should be distributed. Rather, you have taken care of it, and hence you are prepared for your passing of your wealth legacy down the line as per your wishes. And that is what this episode is about. So friends, we meet again when we discuss in detail these instruments ahead further. So till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.